type of the case type. Okay. To replace the old Keene cement plant in a 2060, company purchased the follow. So company has purchased something, keel tube from the Germany, 1000 FOB, two keel bearing, India, 500 export price, control system from the Japan, 50,000 CIF, foundation cost 10,000, erection commissioning cost, marine transportation $1,000, custom duty paid 10% and 20%, custom duty 20%, tax 10% paid. US dollar equal to 50 rupees. Useful life is a 10%, scrap value is a. When you are doing the valuation as on 22, okay, identical clean available from the Germany, 80 CF, 80,000 CIF value, custom duty 20%, 1 USD equal to 75 rupees. Foundation cost is a 12 lakh rupees, erection commissioning is 5 lakh rupees. Okay, so this are data is given about the new kill. So when you are using, trying to find a replacement cost, use this data. Identical kills sold out at 60 rupees 7 years ago, and similar kills sold out at the 55 lakh rupees 2 months ago. So market transaction is given. So whenever the question related to the market approach, you have to select use this data. Net income from the keel, it is a 80 lakh per annum. So when there is a income approach related, you have to this. Effective age, the 3 years, balance useful life is a this much. Effective age given. So when you are doing the valuation for the technical purpose, you have to take the 3 years effective age and you have to take the balance life 10 years. Useful life is a 10 years and the scrap value as on date of the valuation is a 20 lakh rupees. Okay. So one, historical data is given and second, technical data is given. So when you are doing the solving the question related to the books of account, just like find the gross block, find the total accumulated historical depreciation or net book or WDV value, you have to use this historical data. When there is a any question related to the valuation as on date, so you have to use this given data. Okay. So first question, find the gross block in a books of account 2016. 2016 में when company has a purchased the asset, total खर्चा कितना हुआ होगा? Okay, find out. So make the summation of the keel to number of the bearing, control system, find foundation cost, erection commissioning cost. ये सबको आपको जोड़ना पड़ेगा. So if anyone get, please inform कितना आया, gross block कितना होगा. One 139 Okay, 13911.
It is about the 1.3 crore. So, okay. So tube kiln FOB price was 1 lakh. Excel visible to all? Hello. Excel visible? Yes, sir. Okay. So for the kiln tube, FOB was 1 lakh rupees. Marine insurance 1,000 rupees. So total CIF value in US dollar 1 lakh 1,000. We are converting into the Indian rupees at the rate of the 55 rupees. So Indian CIF value will be a 55 lakhs 55,000. We are adding a custom duties at the rate of the 25%. So total custom duty is a 13 lakh point 88. So total cost of the kiln tube this much. Kiln bearing we purchase from the India. X per product one is a 5x. So for two it will be a 10 lakh rupees. So we are adding the taxes at rate of the 10%. So taxes will be 1 lakh. Total cost will be a 11. Control systems CIF value. So we are not adding any marine insurance cost in a conversion 55 rupees. CIF value in a rupees 27.5 lakhs. We are adding the custom duty at the tax rate. So custom duties will total will be a 34 lakhs. So kiln tube, keel bearing, control systems. It is a cost of the equipment. Foundation cost 1 lakh. Erection commissioning costs 500. Total will be a 1.3 gross block. Any doubt? Separate machines cost, separate cost of the component is given to you. You have to make the total cost of the component, make some, add additional costs required for the erection commissioning and other, and okay. So your सर gross सर block will be, हाँ बोलिए. सर सर इनमें क्लीन ट्यूब और कंट्रोल सिस्टम पे 10% टैक्स नहीं लगेगा सर कस्टम ड्यूटी लगने के बाद? नहीं, कस्टम ड्यूटी के बाद अपना टैक्सेस जो जीएसटी नहीं आता, कस्टम ड्यूटी में ही आपका आईजीएसटी आ जाता है. ओके सर. ओके. हम उसमें ऐड कर दिए थे टैक्स, इसीलिए 139 आ गया था. हाँ, थोड़ा बढ़ गया, मतलब हाँ, मुझे उसमें भी आइडिया हो ही टैक्स गया ऐड था. कर दिए. हाँ, सही है. अगर कुछ आप इंडिया में से खरीदते हो तो वहां पे आपको टैक्सीज आज की डेट में बोलेंगे जीएसटी लगता है. अगर आप कुछ अब्रोड से खरीदते हो तो वहां पे आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, और कस्टम ड्यूटी इज इंक्लूडिंग योर टैक्सेस. सो फर्दर वी आर नॉट एडिंग द अदर टैक्सेस ना. ओके. सेकंड क्वेश्चन. Find the accumulated depreciation in books of account as on the 2022. So now you have to find out the accumulated depreciation. You get the gross block 1.3 crore. Based on that, find the age, find the useful life, find the depreciable amount, find the depreciation per annum, and depreciation per annum into age. You will get accumulated depreciation. $60 lakhs. Okay. Any else answer? What is your depreciable amount? 1 lakh. ये 10 1 crore. 10 crores. 1 crore. 1 crore. What is your depreciation per annum? 10 lakhs. What is the age?
6 years. Okay, 6 into 1 lakh, sorry, 6 into 10 lakhs, 60 60 lakhs. lakhs is your total depreciable amount. Okay, find the net book value. The total depreciation is 60 lakhs. Find the net book value. 70 lakhs. 70 lakhs. Okay, gross block minus total depreciation, it will be your net book value. So if your first answer or second answer wrong, but obviously third answer will be become a wrong. सही है? Okay. Second, find the replacement cost new of per kiln. So replacement cost new as on year of valuation. मतलब you have to use this data to find the replacement cost, not a historical data. आंसर नंबर 2, सर क्वेश्चन नंबर 2 में Sorry, क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे सर, डेप्रिसिएशन। depreciable amount फाइंड करोगे तो ग्रॉस ब्लॉक माइनस स्क्रैप वैल्यू। यस सर। आपका ग्रॉस ब्लॉक आया था 1.3, स्क्रैप वैल्यू आपका 30 लाख, 30 लाख। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट ये 1 करोड़। 1 करोड़, यस Depreciation per annum 1 crore divided by 10. यस, गॉट इट। So depreciation per annum is a 10 lakh. Total depreciation multiply by age. Age is a 6 year. So 6 into 10 lakh, 60 lakhs is your total depreciation. यस सर। सर थोड़ा सा आप माउस हटाइएगा सर, वहां दिखता नहीं है। Sorry? थोड़ा सा माउस को थोड़ा सा, आपको जो सिलेक्शन कर दिए हैं दिखता नहीं है। हाँ सर। हाँ, okay. हाँ। Okay. $89 lakhs. Will it be 19 lakhs? Okay. Any else? 89 lakhs. 89 lakhs. 89 lakhs minus Yeah. that depreciated value you have to deduct, no? नहीं, replacement cost new. Replacement cost means if you going to purchase new as on date of the 89 valuation. 89 lakhs, sir. 89 lakh. 89 lakhs. Yeah. Which types of obsolescence you observed in the valuation of kiln? Economic. सर फोर्थ का आंसर क्या है? Physical obsolescence. फोर्थ का Functional, आंसर आया functional. 89 lakhs. 89 lakhs. ओके सर, ओके। Functional obsolescence. Functional obsolescence. Reason? Because the cost, initial investment cost is more. Okay. Excess capital investment. Excess पुराना capital. मशीन महंगा था compared to the new machine. नया मशीन सस्ता है। सर और थोड़ा सा ये बताइए तो सर, वो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आप बोले, ऑलरेडी वी हैव ए मशीन, इट्स डिप्रिशिएटेड कॉस्ट इज 70 lakhs, तो रिप्लेस करने के लिए बाकी 89 से वो 70 तो हमको वहां मिल रहा है, तो रिप्लेस करने के लिए तो 19 lakhs ही चाहिए ना। Sir, we are doing the valuation by the cost approach. What is the first steps of the cost approach? Find the replacement cost new.
This all are related to the books of account. अच्छा. Okay. If book valuation is recorded in a books of account, so why there is a need of the valuer? If you want to do everything on the historical basis. Okay? When we are doing the valuation by the cost approach, first we are finding a replacement cost new. If I purchase the machine new as on today, what will be a total cost to put the asset into serviceable conditions? Okay. Then we are deducting the total depreciation. Depreciation calculated based on the replacement cost new, not a depreciation calculated based on the gross block. Okay. Find the total depreciation as on date of the valuation. So when you are finding the depreciation as on year of the valuation, you have to calculate depreciation based on the replacement cost. Matlab you have to depreciate replacement cost, not you have to depreciate gross block. Gross block are depreciated in the books of account to arrive at the net book value. Find the total depreciation based on the your replacement cost 89 lakhs. पर सर सेकंड वाले में डॉलर का रेट भी तो बढ़ गया ना. हाँ तो so when you are purchasing the new one, when you are finding the replacement cost as on date of the valuation, so same thing you have to also consider. Okay. Oh. Total depreciation 69 lakhs. What is the scrap value? 20 lakhs. What is the depreciable amount? 69 lakhs. What is the age? Age is 6 years. Nahin, effective is age is given, so you have to consider effective age. 3 years. What is the balance useful life? Balance is 10. So 10. total is So what will be a total useful life? 13. So what will be a depreciable per annum? 5,30,769. 5,30,000. So what will be a total depreciation? 15 lakhs 92,000. 50 lakhs 92,000. Yeah. Any doubt? किसी को भी इन steps में, if anyone cannot follow the speed. तो सर आपकी एक्सेल शीट दिखाओ. Sorry. आपकी एक्सेल आंसर वाली शीट दिखाओ. This is for the fourth question. Replacement cost new. Okay, Kiln 80,000. Conversion rate CIF value is given, so we have to not add the marine. Conversion rate 75. So CIF in Indian rupees 60 lakhs. Custom duty 20%. Custom duty will be a 12 lakh. Total will be 72,000. 72,000 plus foundation cost plus erection commissioning cost. Total will be 89. Scrap value is at 20,000. Sorry, 20 lakh. So depreciable amount will be a 69. Your age 3. Total useful life 10. Useful life 13. So depreciable amount divided by total life will give you a depreciation per annum, and depreciation per annum into age will give you total depreciation.
Show me the answer for the 1, 2, 3, 4 also. Sorry. Show the answer for 1, 2, 3 also. Excel sheet. Workings. Okay, we have checked the first one, Okay. Second one, third. second one. Third. Scrap value it is 30,000. So your depreciable amount will be a 10. Sorry, matlab 1 crore. Useful life in a books of account is a 10 years. So depreciation annum per year will be a 10 lakh. Age is a 6 year. So total depreciation will be a 6 into 10 lakhs, 60 lakhs. Okay. Net book value is a gross block minus total depreciation. Your gross block was a 1.3 crore or say 1 crore 30 lakhs minus 60. Minus It will be a 70. Yeah. Any doubt किसी को कुछ भी पूछना हो तो? So what will be a DRC now? Depreciated replacement cost will be a find the depreciated replacement cost. $73 lakhs 7,692. So 73 lakhs something. 89 lakh minus total depreciation which was about 15 lakh. Deduct करोगे तो you will get answer. Okay. Answer of 5 minus answer of 6 will be give a answer of 7. Okay. Find the value of kill as on year of the valuation using the market approach. Market approach से या कोई पूछ रहा था? सिद्धिला एक फोन कर की का What will be a value using the market approach? सर यहाँ कुछ रेट ऑफ रिटर्न कुछ दिया नहीं. अभी मान लीजिए 7 years बैक वो 65 lakhs था, तो आज के डेट में कितना है? But two instances given to you. 2 month उसको ले लेंगे, 2 month का. हाँ. So when you are adopting the market approach, recent transactions are most suitable. So 55 lakhs. 55 lakhs. 55 lakhs will be your answer. Okay. Same capacity. If capacity would have been given, we would have used that exponent formula. Is exponential just like any other information is not given, so you have to adopt the direct. If exponent and capacity, different capacities are given to you, Then you use to that cost to capacity equation. Okay, but in here in question, there is a no like a capacity. If capacity is a given, then you have to use cost to capacity equations. But in entire case studies, there is a no discussion regard to the capacity of keel. Okay. Find the value of keel using the income approach. Its discount rate is a 10%. Okay. So क्या करोगे in this? How will find the valuation by the income approach?
1 divided by 1 plus rate of interest raised to power. Finding the single capital by 38,94,000. कैसे आया? सर इसको ये फॉर्मूला में डाल दिए सर, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला में, ओके sorry, present value formula में present तो value of that is just like years purchase. Per year we are getting sir 5 lakhs. per 8 year lakh. we are getting the 8 lakh, not 8 5 lakhs. lakh. So for 7 years you will be getting. Not for 7 years. What is the balance useful life as on date of the valuation? 10 year 10 Effective years. So age your is 3, life is 10. So 7 years. balance useful life is 10. Oh, sorry. Then 10 we have to use. Then another 20 lakhs also we will get. 20 lakh scrap value we will also get end of the 10th year. So Yes, that sir. we have to also add. Yes, sir. Yes. $56 lakh 86,000. 86,000. 56 lakhs 86,740. Okay. 56 lakh something you are getting the answer. Okay. Next question. Which value is a base suitable purpose for the secure lending? What is the logic? Secure lending purpose से कैसे select करोगे? Minimum हफ्ता लागला out नाही of all three approaches. Okay, minimum of the all three approaches. कहाँ पे minimum आया है? Market. From which approach you get the minimum value? Income approach, sir, 56 lakhs. नहीं, Market 55. market approach Market approach. 55 lakh. Market Oh, approach. sorry, market 55 lakhs. So you will and secure lending purpose से bank financial institute के लिए you will give the 55 lakhs. What will be value for the reinstatement of insurance purpose? Reinstatement value will be a, if you put the asset as on date of new, how much cost will be incurred? 89. 89 lakhs that you find by the cost approach. Yes. Replacement cost new will be a considered reinstatement value for the insurance purpose. What is value for the investment purpose? Income approach. Okay. Whatever you get the answer by the income approach. It is about 56 lakhs. 56. Anyone doubt? Okay, so same type of questions. In an engineering company located in the space. Okay, we are taking a tea break, but those who want to continue. We are keeping on the mind. Bansal ji, tea Yes, break sir. for the 10 minutes. Okay. Okay. Slide मतलब डिस्प्ले रखिएगा, जिसको Yes. गिनना है वो गिनेंगे, अदरवाइज टी ब्रेक एंजॉय करेंगे. 10 minutes only. So friends, if you want to take the advantage of solving this problem during the tea break and you don't want to take or go outside for tea break, then you can continue with it. Otherwise, we are going to take a short tea break for 10 minutes. It is 3:55. We will join sharp at 4:05. 4:05 पे दोबारा शुरू करेंगे. Screen will be on and you can
पकड़ के बैठ गया। ठीक है। Yeah, Mr. Harihar Rao. Yes. I'm Taranjana. Are you making this calculation in Excel sheet? Yes, Excel sheet. Okay. If you don't mind, can you send it to my WhatsApp number? Actually, I am using one more system. In that Excel, I am using. No, later, not now. Ah, So my number is 988. one minute. But I have to prepare and send you because just here I am putting the values. I am not writing any details. Maybe. Number? 988 Uh, 415 uh, 644 6. 988 415 622. The 44 6. 6. Correct. Please repeat. 988 415 Hello, 6446. Rao sir. Yeah. Rao sir, Sir, please note down the number. Double No, nine. my number is there now. First Oh, check. no, please. No, my number is there, Rao. Okay, Rao sir, please note down the number. 99 99 15 15 Akshat 222. Akshat Munzal, are you there? Yeah. Keep quiet. Have you worked out in a neat form? Have you worked out this problem Please, in step-by-step order? Please. 9915 222 400. For exam, I'll prepare. Okay. Could you send this after working out some Sure. sample? No Yeah, problem. 2 or 3 problem by so that Rao I sir, you have prepare noted this down? week. Rao Okay. sir, you have noted down? Sir, noted. 9915 222 400. Yeah, please. Akshat Munsal, could you send it? Yeah, please send it. Let him also send it. Intelligent boy. Yeah, let him also send it because he will be in different step-by-step procedure. I want it to clearly understand. So, Rao Saab, you have noted my number, right? Yes. 988 415 6446. Yes, noted. So, my name is short name Thiru. So these case studies, including the solution in Excel sheet, is already added in your folder. There are 6 special case studies for CEV, and you will get all the related topics and other things in these all case studies. And the solution along with this Excel sheet is already added in your folder. There are so many other folders are being added, and till today evening, various other files will also be added for taking the advantage of the whole study material and other things also related to syllabus. Yeah, okay. So engineering company located in the Sage purchased the CNC machine at the 1st Jan 2015 from the Japan. Cost of the machine was a 15,000 CFI, 1 USD equal to 15. Insurance freight up to Indian port was the 1,500. Custom duty 25%, erection commissioning cost 50%. Interest on the machine for 3 months, 12% per annum. Company got rebate custom duty after the starting the commercial productions. Okay, assume date when you are doing the valuation on 31st December 21, similar machine with the advanced utility available at the 45 lakhs in India with a 20% applicable taxes. Other cost 50,000 to put the asset into serviceable condition. Cost to sell is a 25,000. Business value is a 2 crore.
Net income from the machine is a 1 lakh per annum. Useful life is a 15 years. Scrap value is a 30,000. So one, find the historical cost in a books of account of the company. So this data which is given to you, historical data, will give you a historical cost. Anyone? 8,99,750. 8,99,000 थोड़ा गलत है. Anyone else try? 9 lakhs 87,000. Sorry? 9 lakhs 87,500. नहीं, again थोड़ा 8 repeat. lakh 10 वो तो lakh expression है 24,000. Okay, let's check answer. 8,75,000. हाँ, ऐसा ही कुछ है, but not precise. Okay, visible Excel to all? Excel दिखती है? हाँ सर. Okay, so Yes, sir. CIF value 15,000. Okay, so you have to not add the marine insurance cost because CIF value include the marine insurance costs. Conversion rate was the 50 rupees. So CIF value in the rupees was the 7.5x. Add 25 custom duty, 25% custom duty. It was about 1.87 lakhs. So total value, it is a 9.3. Erection commissioning cost is a 15,000. Erection commissioning cost, interest you have to pay for the 3 months. So 12% annum is given. So 12% annum interest cost are over the machine only. Okay, interest cost over the machine only. So 12% of 7.5 lakhs, it is a 90,000. So for 3 months, it will be become a 22,500. So historical cost 10 minus you are getting the rebate. आपने जो custom duty pay की थी after erection commissioning, you are getting the rebate. So rebate has to deducted, and your answer will be 8,22,500. But what about that $1,500 that shipping charge you have left, sir? CIF value is given. So CIF value includes your shipping cost. Oh, there we made a mistake. Okay. CIF full form, sir? Sorry? CIF means, sir, full form? That is including Cost freight. insurance freight. Cost insurance freight. CIF. Cost insurance freight. It's include your cost of insurance and freight. That made a Okay. mistake. So you have to not add this 1.5 thousand in your books account because it is given for the just making the confusion. If FOB given, then you have to add. Okay. So your historical cost is a 8.2 lakh. Sorry, 22.5 thousand. 22 lakhs. Any doubt? May I repeat? Yeah, may I share the Excel? Yes, please. Yeah. Yeah. Many times we are making mistake here also. So interest cost is on the machine only, not entire cost. If you read the question, okay, interest on a cost of machine. Cost of machine was only 7.5 lakhs. This is a erection commissioning cost, 50,000. It is not cost of machine. So 3 months interest. If 12% per annum, so total will be a 9,000. So for 3 months, it will be a 22,500. So you have to add the interest only 22,000. Okay, so it become a
cost of machine plus erection commissioning plus cost of interest 10.10, and your custom duty is rebatable, so you have to remove custom duties. So answer will be 8.22. Yeah. Any doubt? Question? Okay. Find the total depreciation. I think so. Question was same. 3,69,833. Find the accumulated depreciation on a December 21. 3 What is the lakh age of machine now? 7. 7 years. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 years. What will be a depreciable amount? 7,92,500. 92,500. नहीं, depreciable amount कैसे find करोगे? 8,22,000 minus 30,000. Minus Yes, 30,000. scrap value. Scrap value. So yeah, your depreciable amount will be a 9.2 lakhs. 7.92 lakhs. 7.92 lakhs. What will be a depreciation per annum? Divide by 15. 52,833. 52,833. What will be a total depreciation? 3,69,833. Per annum into age. Yeah, 3,69,000 something. Anyone getting confusion or getting no answer or deviated answer? Okay. Find the replacement cost. If it is a matter of the replacement cost, you have to use the data given as on date of valuation. 5,90,000. Yes, sir. 5,90,000. Anyone getting answer? 5.9 else answer. Okay, cost 4.5 plus 20% tax plus other 50,000. cost 50,000. Sum of these three, cost of the machine plus tax plus other cost, if you add, will get a replacement cost means. What will be, which types of obsolescence observed in the valuation of the CNC machine? Functional Obsolescence, lower cost. New machine are cheaper than historical cost. What are the total depreciation? 5,60,000. What will be depreciable amount? 5,60,000, sir. Depreciable amount 5,60,000. What will be depreciation per annum? 37,333. Okay. What is the age? 7 years. 7 years. If you multiply depreciation per annum into 7, your answer will be 2,61,333. 2,61,033. Anyone get wrong answer or deviated answer? Getting confusion? It is as simple as lot of time we have done. Okay. Find the fair value less cost to sell using the cost approach. Okay, your DRC are considered as a fair value or value. So what will be a fair value less cost to sell? ये easy question है. Say minus 25,000 कर देना. तो क्या आएगा? What is the DRC? DRC कितनी आई थी? 3,28,000. 3,28,667. Yes. Okay. How to find DRC? Depreciated replacement cost. Replacement cost minus accumulated Replacement depreciation. cost minus accumulated depreciation. Total depreciation or say accumulated depreciation. What is the fair value less cost to sell? 3,03,667.
3,03,667. Yes, sir. Find the value in use of the CNC machine if discount rate is a 10%. अगर ये मशीन को आप यूज करोगे तो इसकी कितनी वैल्यू बनेगी if discount rate is 10%. So which data you will use now? वैल्यू न्यूज फाइंड करने के लिए इनकम Net income Income method. approach. What is the net income? 1 lakh per annum. 1 lakh per annum. What is the balance useful life of the machine? 8 years. बैलेंस लाइफ कितनी है मशीन की? 8 years. 8 years of 50 8 minus years. 7. So you will capitalize this 1 lakh up to the 8 years plus scrap value end of the 8 years. You will get answer. 5.33 lakhs. या थोड़ा Or scrap value. deviated. Okay, add the scrap value may probable you get. Hmm. 5.47. 5.47. Okay. What is the recoverable amount? Anyone? Recoverable amount. What do you mean by the recoverable amount? Scrap value. Nahi. Okay. During the impairment loss, we have studied recoverable amount. Higher of something value in use वो recover था. Higher of Value fair in value less cost of sell and value in value in use. use. So which one is 5,47,000. higher? Fair value less cost to sell or value in use? Value in use. 5 lakh. Higher क्या है? Value in use. Value in use is higher. Okay. So Sir, again, sir, sorry. please define that on recoverable value equal to higher of Higher of recoverable amount is equal to higher of fair value less cost to sell fair value less cost to sell और value in use. ये दोनों में से जो ज्यादा होगा it is known as a recoverable amount. So answer 8 and answer 9, whatever will be higher, it will be a recoverable amount. Okay. Find the impairment loss. Is there any impairment loss or not? If there, find the impairment loss. What do you mean by the impairment loss? Impairment loss का मतलब क्या होता है? What is the definition of the impairment loss? Carrying amount exceeds is recoverable amount. In this case, his carrying amount exceed is recoverable amount. Carrying amount, net book value, all are the same. So his net book value is exceeding recoverable amount, yes or no?
No, sir. No. So No impairment loss will be a 0. 0. There is no any impairment loss. Okay. This is case study based on the impairment loss. So last 8, सर 9, बिल्डिंग में भी ये टर्म आता है सर? sorry, बिल्डिंग में ये टर्म सब आता है? बिल्डिंग में भी टर्म आता है. बिल्डिंग में also there is a impairment loss like a word. Okay. So वही रिकवरेबल अमाउंट सब रहेगा. same definition. Impairment loss will be a same for the land building, plant and machinery or say SFA. It's a common. Okay. Which is a differ, maybe that is a, we are not, whatever extra available in land building or SFA, that we are not studying in the plant and machinery. So plant and machinery has a limited case studies, which is all part of the land and building also, even. Yeah. Now show me the Excel. Excel. Yeah, show me. Okay. So we have studied, okay. We have find this already. So fourth question, cost of the machine, replacement cost new. 4.5, 20 plus tax, 90,000 plus other cost. So your replacement cost new will be a 5.90 lakhs. Okay. Replacement cost new is a lower than the your historical cost. So it is a suffering by the functional observations. Total depreciation, scrap value is a 30,000. So your depreciable amount will be a 5.60 lakhs. Useful life is a 15. So depreciation per annum will be a 37.333. Age from the 15 to 21. Jan 15 to December 21 is a 7 years. So total depreciation will be a 7 into depreciation per annum. It is a total depreciation. DRC, it is your replacement cost minus total depreciation. Your replacement cost was a 5.90 lakhs. Total depreciation was a 2.61 lakhs. So DRC will be a 3.28 lakhs. Okay. Cost to sell, it is a 25,000. So fair value less cost to sell, it is a 3.03 lakhs. Value in use, to find the value in use, balance life is a 8 years. So up to 8 years, we extracted 1 year, 1 lakh. End of the 8 year, you will also get the 30,000 rupees. So one, at rate of the 10%, we find the present value factor. Present value factor into the net income. We get the present value. Sum of the present value, it is a value in use, 5.47 lakhs. Okay. So your recover amount is a higher of value in use to the cost to sell. Your recover amount will be a 5.47, which is a value in use is a higher. So carrying amount, your carrying amount is a net block 4.5. Carrying amount and recover amount is a 5.5. So there is a no impairment loss. Okay. Carrying amount do not exceed the recoverable amount. So there is a no impairment loss. If carrying amount exceeds, इससे ज्यादा होगी recoverable amount से, so there is an impairment loss. Okay. Yeah. Any doubt? Any question? किसी को? Okay, fourth. यहाँ पे भी थोड़ा लॉजिक है. Try to understand. A company has started commercial operation of the thermal power plant of the capacity of the 5 megawatt 22. The cost incurred as follow. When the company started the power plant,
in 2002. Cost of machinery 2.8 crore per megawatt. Cost of employee benefit aligning directing to construction plant and machinery 20 crore. Cost of site preparations 10 crore. Cost of delivery handling 0.4 per megawatt. Cost of erection commissioning 1.25 crore per megawatt. Professional charges for erection commissioning 30 crore. Cost of opening of new visit 2 crore. General administration overhead 5 crore. The ABC company got 100 crore as a rebate after starting the commercial operation. 100 crore rebate मिला है तो rebate को आपको deduct करना पड़ेगा. When you are doing the valuation in 22, okay, cost of the replacement is a 7.5 crore per megawatt. Due to the competition with renewable energy, PLF of the plant is a 45% for the last 5 years and will remain same for the balance life. Okay. Which types of obsolescence you find here? Obsolescence due to the competition, over competition, economic obsolescence. Any thermal power plant in industry has not utilized more than 90% of installed capacity. कोई भी power plant ने 90% से ज़्यादा utilize नहीं किया है. Cost of repair and maintenance of the subject plant is about 5 lakhs per annum more than the other thermal power plant. Discount rate is 10%. Recently, identical thermal plant sold out at the rupees of 0.7 per megawatt. Plant is generating 90 crore net income per annum. Discount rate is 10%. Useful life is 25 years. Spare is 5. Scrap is 5 crores. Okay. थोड़ा difficult है, but you will get it. So, पहला question. Find the total historical cost incurred for the establishment of the thermal power station. Is historical cost सारे eligible historical cost का summation करना पड़ेगा. You have to make the summation. Cost of initial delivery 0.04 crores per megawatt or only 0.04 rupees? 0.04 per megawatt. Or 0.04 crores? नहीं, 0.04 per megawatt. बहुत कम है तो. सर ये केस स्टडी है. And it is a initial delivery and handling, which is a transportation cost. Okay, try to find out. अब सबको मतलब मेजर क्वेश्चंस तो सॉल्व होने चाहिए. फर्स्ट 3 तो सॉल्व होने ही चाहिए. 4, 5, फर्स्ट 5 तो सॉल्व हो जाने चाहिए. Okay, there is nothing new. देखिए, आप कोशिश करिए सॉल्व करने की. गलत भी होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एटलीस्ट पता तो चलेगा कहाँ पर गलती है, क्या फॉर्मूला गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशन गलत है, क्यों गलत है, वो आप पूछ सकते हैं. अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करने में गलत हो या सही हो, इट डजेंट मैटर, उसकी कोई अहमियत नहीं है. बट इन केस ऑफ एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, if you solve or correct tick the wrong answer, then it may affect your result, and one bad result worth rupees 6,000 per attempt. Two 487. 2512. First one is 2465.
2512 25 नहीं 2465 नहीं 2487 2512 लेस चेक। ओके देखिए, ट्राई प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जो बंसल जी ने बोला कि एक अटेम्प्ट आपको 6,000 का पड़ेगा, और नाउ डेज आज की डेट में मतलब पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट है, एवरी 7 अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट क्लियर। आप समझे, 7 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट ही क्लियर हो पाया है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ मशीनरी 3.8 करोड़ पर मेगावाट, सो टोटल कॉस्ट वाज 90 करोड़, 1,900 करोड़। Cost of employees direct benefit 20 crore, site preparation 10 crore, cost of handling 10 crores, 0.04 into 500 20 crore, erection commissioning 1.25 per megawatt, so 6.5, professional charges 30 crore. Other cost, it is a not eligible. Opening cost and general overhead cost is not eligible cost. Okay, so total cost. यार वही चीज मैं पूछ रहा था, आप 0.04 करोड़ ले लिए ना सर? सर लिखा तो है। नहीं नहीं, आप क्रोर्स में लिए सर, वो रुपीस में था, इसीलिए मैं पूछ रहा था। ओके ओके, 0.04 करोड़ पर मेगावाट, हाँ, नॉट वो ओनली कहने से रुपीज। मेरा हाँ भी आंसर आ जाता। वो वहां हाँ, पर कोई पॉइंट बात नहीं जीरो यार, फोर आई एम बहुत सॉरी। कम है। मेरा देखिए, 0.00002 आ गया वो। ओके आई विल मेक मतलब चेंज कर देंगे। और 100 करोड़ इज अ रिबेटेबल, सो डिडक्ट द 100 करोड़, योर आंसर विल बी 2505। 2505 Okay, 2505। नाउ फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब नेट बुक वैल्यू, नेट ब्लॉक, ये सब एक ही चीज है, तो वही फाइंड करना है। बुक वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। 2500 -5। सर टोटल डिप्रिसिएशन 2500 करोड़ है, पर ईयर 100 करोड़ है, 20 ईयर देखिए, है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? टोटल डिप्रिसिएशन 2500। कैसे 2500? 2505 2505 तो -5। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होगी? डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या रहेगी? 2505 -5। तो 2000, 2500, 2500। 2500। हाँ, व्हाट विल डेप्रिसिएशन पर एनम? 100। 100। एज कितनी हुई है? 20। तो व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन? 2000। 2000 करोड़। सॉरी सॉरी सॉरी। Okay, any doubt in a total depreciation or accumulated depreciation? Both words are same. Okay, what will be a carrying amount? 505। Okay, historical cost minus total depreciation 505 will be a carrying amount. Which types of obsolescence observed in a valuation of the thermal power plant? economic Okay, you are observing economic and functional both. आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है। नया पावर प्लांट कितने में बनता है?
7.5 crore per नहीं, megawatt. तो सॉरी इकोनॉमिक आएगा, कॉस्टिंग तो ज्यादा है। पुराना पावर प्लांट था इन रेंज ऑफ 5 करोड़, 25 year 5 crore, yeah. So which types of obsolescence you find? Economic, due to the competitions. Find the replacement cost new. Okay, replacement cost new क्या आएगा? ये तो इजी है। 3750. कितना आएगा? 3750. कैसे? 7.5 करोड़ पर मेगावाट दिया हुआ है। हाँ, तो इंटू इंटू 500. 500 क्या इंटू आएगा? 500 होगा ये। 1875, 7.5 into 500, ओके। गेटिंग कितना आया रिप्लेसमेंट कॉस्ट? Find the total depreciation due to age only, ignoring other factor of the thermal power plant as on year of the valuation. Depreciation, total depreciation कितना आया ड्यू टू द एज ओनली, मतलब जो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं, दैट वी आर कंसिडरिंग एज एंड बैलेंस लाइफ ओनली। सो वो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा एज ऑन ईयर ऑफ द वैल्यूएशन, मतलब नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। थ्री 3000 करोड़। कितना आया टोटल डेप्रिसिएशन? सॉरी 3000 करोड़। जैसे 3000 रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी तो आपकी 1875 है। You have to take care as on date of the valuation replacement cost। आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आई है? 3755। कितनी आई है रिप्लेसमेंट कॉस्ट? 3755 7.5 इंटू 500 7.5 into 500 3750। okay, anyone else? Nowadays what is a capacity of your thermal power plant? अगर आप ये थर्मल पावर प्लांट खरीदना चाहोगे तो किस कैपेसिटी पे खरीदोगे? This also we have discussed during the theory discussion. 500 megawatt. 500, which is not the capacity which is not utilized, and 450. even it will be not utilized in future also. 450. Nowadays what is a capacity of a power plant? ये पावर प्लांट खरीदना चाहोगे तो किस कैपेसिटी के रेटिंग पे कोई खरीदेगा या आप खरीदोगे? अब ये पावर प्लांट किस कैपेसिटी पे चलने वाला है बेस्ड ऑन द गिवन डेटा? 45%. 45%। 45% मतलब कितने मेगावाट पे चलने वाला है ये? 225. 225।
225 मेगावाट्स पे चलने वाला है। ओके, अब कोई भी प्लांट, सेकंड, कोई भी प्लांट कैन नॉट अचीव मोर देन 90%। मतलब अगर ये प्लांट 225 पे मैक्सिमम चलता है, जिस 90% ऑफ टोटल कैपेसिटी, तो प्लांट की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? डिवाइडेड बाय 9 0.9, उसका 90 आ जाएगा। सॉरी, 250। 250। अगर ये प्लांट की कैपेसिटी 250 है और प्लांट 90% एफिशिएंसी पे चलता है, तो इट विल बी रन एट द 225। तो एज ऑन रूट ऑफ वैल्यूएशन, अगर मैं या कोई भी खरीदना चाहेगा ये प्लांट, तो ऐसा ही समझ के खरीदेगा कि प्लांट की कैपेसिटी 250 मेगावाट है, नॉट 500 मेगावाट। इट इज अ नॉट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। प्लांट आगे चलने ही वाला नहीं है ड्यू टू द कंपटीशन एट रेट ऑफ द 500 मेगावाट्स, सो आई विल नॉट पे 500। जो भी ऑपरेशनल कैपेसिटी बची है इन प्लांट में, वही मैं पे करूंगा। सही है। सो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कब कितनी आएगी नाउ, एट विच कैपेसिटी वी आर परचेजिंग? 1875 into 7. ओके, 250 इंटू 0.75 पर मेगावाट, तो 1875। किसी को भी डाउट ये डेटा समझने में? देखिए, फिजिकली प्लांट इज अ 500 मेगावाट, बट इट इज नॉट ऑपरेटेड इन 500 megawatt. Even it will be in a future will not operate at the 500 megawatts. So maximum that will be used at the 45% PLF only. So nowadays, though physical capacity, installed capacity 500 megawatt, its operational capacity will be up to the 250 megawatt only. किस कोई बंदा पे करेगा तो 250 मेगावाट के लिए ही पे करेगा, because it will be a not operating in the future also. Okay, now what will be a total depreciation if you consider replacement cost 1875? 1496. 1496. Anyone not getting the answer 1496? If you have tried. Okay. Find the total depreciation by considering all the factor of the thermal plant as a date of valuation. So you find the depreciation using the age only. There is also loss in value due to the functional obsolescence. And what is the functional obsolescence here? कौन सा फैक्टर है फंक्शनल ऑब्सोलेशंस का? Anyone? There is a functional obsolescence also. You are finding here which types of functional obsolescence you are finding, which factor indicate that there is a functional obsolescence? Repair and maintenance. Repair and maintenance cost. Cost of repair and maintenance of the plant is about 50 lakhs per annum more than other thermal plants. So ये प्लांट ऑपरेट करने का खर्चा 50 लाख ज्यादा आता है हर साल कंपेयर टू अदर। तो जो एक्सेस ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको भी आप एज ए डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए फंक्शनल ऑपरेशंस। ओके, तो कैसे फाइंड करोगे इसकी? 50 लाख पर एनम हर साल ज्यादा आता है, तो कितना डेप्रिशिएट और करोगे, या व्हाट विल बी अ पार्ट ऑफ द फंक्शनल ऑब्सोलेशंस, कितना रहेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सेस कॉस्ट। जैसे हम इनकम अप्रोच में कर रहे थे वही चीज यहां करनी पड़ेगी, बट you have to not add
It is around 1.895. सही है, 0.9। बैलेंस लाइफ 5 साल बची है, यूजफुल लाइफ 25, एज 20 हो चुकी है, तो अगले 5 साल तक ये प्लांट चलेगा। प्लांट 5 साल चलेगा तो 0.5 करोड़ या 50 लाख ज्यादा खर्चा होगा। That we convert into the present value. Okay, here you have to not add the scrap value. So at the rate of 10%, we find the present value factor. We find the present value, and sum of the present value, it is a loss due to the functional obsolescence. Okay. So due to the age, your depreciation is a 1496. Due to the functional obsolescence, you have to deduct more, 1.9 crore. So your total depreciation will be a 1497.99. Okay. Anyone? Steps of the cost approach? Steps of the cost approach. कैसे फाइंड करते हैं कॉस्ट अप्रोच में वैल्यू? First, find the replacement or reproduction cost. Second, deduct the depreciation due to the physical deteriorations. Third, deduct functional obsolescence, deduct economical obsolescence, and you are getting the DRC. Replacement cost minus total depreciation minus functional obsolescence minus economic obsolescence, you are getting the DRC. Okay. So here we are also deducting the functional obsolescence due to the excess operating cost. What are the two reasons of functional obsolescence? Anyone? What are the two reasons of a functional obsolescence? Technology change. Nahin. One is a excess capital investment. Second, excess operating cost. Okay. ये दो रीजन है. Okay. Now what will be a DRC? DRC कितनी होगी? You have find replacement cost. You have find okay. You have find the replacement cost. You have find the total depreciation. So what is now DRC? Depreciated replacement cost क्या रहेगी? Replacement cost new minus depreciation. Minus total depreciation. ओके, तो क्या रहेगा? सिंपल है ये तो. ओके, 3.77 1.0. तो કેટલા વાગે? કઈ વાંધો નહીં, 7.5 કીધું. Okay. Find the value. Okay, any doubt? Total DRC, replacement cost minus total depreciation, depreciation due to the age and depreciation due to the functional obsolescence. Find the value of power plant using the market approach. Okay, कौन सा डेटा यूज करोगे? जो recent identical thermal power plant sold out at rupees 0.7.
0.7 per करोड़ megawatt. और वहां भी करोड़ लिखना पड़ेगा। करोड़ पर मेगावाट, Per megawatt. तो कितना आएगा मार्केट अप्रोच से वैल्यू? तो 250 into 0.7 250 into 0.7 क्या रहेगा? 1875. 175 175. Okay. What will be value by income approach? What will be value by income तो approach? कॉस्ट अप्रोच में हम लोग कर रहे हैं, उसमें वो इंस्टॉलेशन चार्ज ये वो ऐड नहीं करेंगे? कौन सा? ये जो इंस्टॉलेशन चार्ज ये सब कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है, डाटा नहीं किसमें? दिया है बोल के ये क्या? हाँ मतलब प्लांट ही सोल्ड आउट दिया गया है ना भाई, रिसेंटली आइडेंटिकल थर्मल प्लांट सोल्ड आउट एट 0.75 मेगा करोड़। हाँ, 1 मेगा करोड़ को 0.7 करोड़ के हिसाब से सेल हुआ है, तो सेम थिंग। उसमें और ये जो हैंडलिंग चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज वो सब ऐड नहीं सर होगा? ये बना हुआ प्लांट ही सेल आउट हुआ है ना। अच्छा अच्छा, वो प्लांट मतलब टोटल। अच्छा अच्छा, हाँ टोटल प्लांट ही बना हुआ प्लांट ही सेल हुआ है। ठीक है ठीक है। सही है। ओके, फाइंड द वैल्यू बाय द इनकम अप्रोच if it is generating the plant is generating 90 crore net income per annum, discount rate 10%। सिंपल ये है, हमने बहुत बार किया है। $480.14। क्रैप वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। हाँ, 5 करोड़ जो है वो ऐड करना पड़ेगा आपको। जी जी जी, और 2.33 मिल जाएगा। 482.48। नहीं नहीं, कुछ गलत हो रहा है। 5 crore 0.18 years। बैलेंस लाइफ कितनी है प्लांट की अभी? प्लांट अगले 5 5 year. साल तक 5 चलेगा। साल 5 year. 5 year. हर साल 90 करोड़ जनरेट करेगा। एंड ऑफ द 5th ईयर यू विल आल्सो गेट द स्क्रैप वैल्यू। 340. So these are the net income, present value factor at rate of 10%. 344.28। Okay, so present value, sum of all present value, 3.344.28 crore. सर Okay. किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो? नहीं। So you have to make a solve this case study your own. ये अपने आप करना है, ये वाला नहीं। एक्सेल खुली है क्या? विजिबल टू ऑल? नहीं सर। एक्सेल आ गया ना? तो 10 क्वेश्चन है
or 2 minutes for the each questions. So after 25 minutes, I will come back to you. Okay? और इंडिविजुअली पूछूंगा नाम लेके कि आपका कितना आंसर आया. ओके, सो यू हैव टू डू योर सेल्फ. जैसे अमित कितना आंसर, इस आंसर का, सॉरी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया. राकेश, इस आंसर का क्या क्वेश्चन आया, सॉरी 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 सॉरी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया. इंडिविजुअली पूछूंगा तो आपको करना है. ओके, तो केस ऐसा है कि भाई एक स्पिनिंग कंपनी ने परचेज द ऑटोमेटिक वाइंडर फ्रॉम द जर्मनी. CIF value at a 2 lakh euro. At the time, 1 euro was a 60 rupees as on the 20 March 14 and put serviceable conditions 1st April 2014. At the time of purchase, custom duty was at 25% and marine transportation cost was 1,000 euro. You are doing the valuation of 1st April 2021. जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो, एज ऑन डेट ऑफ द वैल्यूएशन 1 euro is a 85 rupees and custom duty is a 20%. In February, the company has introduced new automatic FOB 1.75 euros, same capacity, this much cost. New automatic winders producing more 4 lakhs net income compared to the subject. Second in market, automatic winder manufacturing in 2000, available at the CIF value 45 euros. Index number is given. Useful life of is a 10 years. Scrap value is a 5 lakh rupees. तो ये डेटा गिवन है, उसके बेसिस पे यू हैव टू फाइंड द आंसर. ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ. आफ्टर 25 मिनट्स मैं सबसे पूछूंगा क्या आंसर आया आपका. अनरीडेबल है तो भी बताइए, आई विल थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे जितना मैक्सिमम पॉसिबल है. ये सो थोड़ा करना जूम. इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, बट यू हैव टू सॉल्व योर ओन ओनली. सर इसमें लिखा है 25% कस्टम मेरीन ट्रांसपोर्टेशन विद इंश्योरेंस 1,000 euro. एंड सी ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CIF. So if it is a CIF value, so you have to not add the marine insurance cost. Okay. Yeah. So it is Okay. simple. देखिए, एग्जाम में भी आपको इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा. जितनी तरह के केस स्टडीज आपने अभी तक किए हैं, कुछ हमने कल किए थे, कुछ लास्ट वीक किए थे, ऑलमोस्ट 20 केस स्टडीज वी हैव कवर्ड टिल नाउ. तो एग्जाम में आपको इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं और अपनी तरीके से सॉल्व करते हैं, अपने माइंड के डाटा जो आपने अभी तक स्टोर किया है आपके हार्ड डिस्क ऑफ योर माइंड, तो उससे अगर सॉल्व करते हैं और उसमें कोई गलती आती है तो अच्छा है कि गलती आपको पता चले कि कहां पर गलती है. बिल्कुल हेसिटेट मत होइए. कोई भी गलती है, इफ इन केस यू आर फाइंडिंग एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, डोंट हेसिटेट टू आस्क एनीथिंग.
it is always better to find your mistake in calculation before going to the examination hall. Yeah. की करना है हमारे में तो मेरे पहले तो बोल लिया था ये हाँ सॉरी बट रिप्रोडक्शन कॉस्ट और ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू क्या बन सकता है? देखिए बताया था एक समय कि व्हेन यू हैव टू फाइंड reproduction cost then use the index data and replacement cost, that is a given price, new price of the new machine 105. as on date of the valuation. To find the indexation cost, use the index data. To find the replacement cost, use the whatever price of new machine is given. Sir, for reproduction, which cost we will be taking actually? Reproduction cost के लिए जो index data लिया गया है 1,75,000 will take. और जब परचेज किया था 2014 में इंडेक्स नंबर था 98. 05 divided by 98 आएगा ना सर? हाँ सर, हाँ 105 by 98 multiplied by 105 डिवाइडेड बाय 98 हाँ और उसको मल्टीप्लाई कीजिए विथ कॉस्ट ऑफ मशीन. in the year 2014. हाँ नहीं, वो जो बोल रहा है कि सेकंड हैंड मशीन अवेलेबल है 2014 का मैन्युफैक्चर 45,000 यूरो में, उसका कुछ लिंक नहीं है सर. हिस्टोरिकल कॉस्ट से ही आपका तो इंडेक्सेशन आएगा ना. जी 105 डिवाइडेड बाय 98, जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द मशीन. जी जी.
सर वहाँ कस्टम ड्यूटी फिर कैसे लेंगे? यहाँ तो दे रहा है कि 21 में 20% हो गया कस्टम ड्यूटी, तो या वो हिस्टोरिकल ही लेना पड़ेगा? देखिए नहीं, रिप्रोडक्शन कॉस्ट न्यू का मतलब क्या होता है यार, आज की डेट में सर फॉर द कॉस्ट ऑफ द मशीन यू आर टेकिंग द बेस मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द हिस्टोरिकल, बाकी का खर्चा जो आज की डेट में होगा दैट यू हैव टू ऐड। अच्छा, और यूरो का रेट भी तो 85 दे दिया है। तो आज की डेट का रिप्रोडक्शन कॉस्ट न्यू मतलब आज की डेट में मैं खरीदना चाहता हूं तब क्या होगा, और when you are applying the multiplying factor indexation method you are getting the replacement cost, sorry, reproduction cost. So that's why you are using the index number to find a reproduction cost. तो कस्टम ड्यूटी अभी क्या ऐड करना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी एंड अदर कॉस्ट जो भी कोई है वो आज का ऐड करना पड़ेगा आपको। हेलो 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 हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। सर, जब हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें अपने को ये 2000 ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस ये काउंट करना है नहीं करना? आप भी बोलिए करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, करेंगे तो क्यों करेंगे। देखिए एफओबी वैल्यू दी है, एफओबी वैल्यू डू नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस एंड फ्राइट, सही है, तो यू हैव टू ऐड। अगर सीआईएफ वैल्यू दी है तो नहीं इंक्लूड करना है, एफओबी दी है तो यू हैव टू ऐड। ओके सर। सर ये फोर्थ क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू इन ईयर 2021 मतलब नए इस पे डेप्रिसिएटेड कॉस्ट का है क्या? हाँ, depreciated नए replacement मतलब cost based on whatever the replacement cost you have find, based on that you have to find DRC, depreciated replacement cost, मतलब you have ओके to take replacement cost as a base, not a reproduction cost as a base. ओके ओके। अमाउंट ऑफ ऑब्सलेंस क्या था? हेलो हाँ बोलिए। सर, अमाउंट ऑफ ऑब्सलेंस क्या था? अमाउंट ऑफ ऑब्सोलेशन, कितना ऑब्सोलेशन है, अमाउंट ऑफ ऑब्सोलेशन मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ऑब्सोलेशन कितना है। करे तो कौन सा ऑब्सोलेशन आ रहा है इसमें, नया मशीन 4 लाख रुपए ज्यादा कमा के देता है, मतलब पुराना मशीन 4 लाख कम कमा के देता है, एक्सेस yield, so that 4 lakh you have to इकोनॉमिकल convert फंक्शनल functional obsolescence। एफिशिएंसी ज्यादा होगी ना शायद तो। सही है, तो चार इकोनॉमिकल नहीं लाख होगा। रुपए को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है फॉर इस बैलेंस लाइफ। जो लास्ट सब में किया था हमने, लास्ट सब में क्या था, एक्सेस ऑपरेटिंग कॉस्ट था, यहाँ पे यील्ड लॉस है, कमाई कम करता है पुराना मशीन कंपेयर टू द न्यू मशीन। तो कितना कमाई कम करता है, पर हर साल 4 लाख, तो कन्वर्ट दिस 4 लाख इनटू द प्रेजेंट वैल्यू।
सर ये फिफ्थ क्वेश्चन में यूरो का रेट क्या लेना है सर? 85 रुपीज लेना है, नहीं तो 60 रुपीज लेना कौन से क्वेश्चन में? टू फाइंड द है? सेकेंड हैंड ऑटोमेटिक वेंडर इन इंडिया, फिफ्थ नहीं नहीं, क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ सर। फिफ्थ में तो व्हाट विल बी अ प्राइस ऑफ सेकंड हैंड ऑटोमेटिक? सर एक टेबल बना देने से अच्छा होगा सर, कि कहाँ कौन सी लेना है, थोड़ा कंफ्यूजन ही रहता है। मैंने एक समरी जैसे, मैंने सिक्योर लैंडिंग के लिए क्या लेना है, इंश्योरेंस के लिए क्या लेना है, डीआरसी के लिए क्या लेना है। देखिए, जब इंश्योरेंस पर्पस के लिए बात होती है तो हायर ऑफ रिप्रोडक्शन कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। अगर आप सिक्योर लैंडिंग के लिए करते हो तो लोअर ऑफ 3 अप्रोचेस, और लेकिन इन्वेस्टर के करते हो यहाँ जो तो बाय सेकंड इनकम है। इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो लोएस्ट होगा, उसको लगेगी नहीं। सॉरी, जो सेकंड हैंड मशीन सबसे लोएस्ट है सर वो सेकंड हैंड मशीन है, नया वाला मशीन नहीं है। अच्छा, एक एक का आंसर देखेंगे सर अभी। हम करेंगे अभी, मतलब 1-2 मिनट बचे हैं, फिर 2 मिनट के बाद देखते हैं एक एक करके सारे आंसर। टोटल 10 क्वेश्चन है सर। तो नॉर्मली यू आर गेटिंग द 2 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क का आपका एग्जाम है, और 2 घंटे होते हैं ना कि 3 घंटे? एग्जाम के लिए कितना टाइमिंग होता है? 120 मिनट्स सर। 120 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन के लिए तो आपको 1.2 मिनट ही मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसी को मिला था क्या? 15 करोड़ 1.5 1.5 करोड़। ओके, ये तो हाँ। सेकंड, 1.54 रिप्रोडक्शन कॉस्ट। सर 1,80,20,000। 1.6 crores. 1.6 1.6 crores. नहीं, 2.18 नहीं नहीं नहीं, नहीं देखते हैं। ये क्या है? 1.54 आया है हाँ, 1 मिनट देखते हैं सर। सर। आंसर इज अ फाइंड रिप्रोडक्शन कॉस्ट। मिनट। Reproduction cost. Okay. So first of all, what is your multiplying factor? Zero 1.5 divided by 98. So 1.07 multiplying factor based on the indexation. What is the historical cost? 1 crore 50 lakhs. 2 crore.
2 करोड़ यूरो। Oh. ओके, तो जो मशीन €2 लाख, ओके, जो मशीन 14 में €2 लाख में मिल रहा था, आज की उसका इन्फ्लेशन मिला के ऑफ दैट कंट्री, इट विल बी अवेलेबल एट इन रेंज ऑफ द 0.14. 2 lakhs, this much, 2.4 lakhs. Okay, now it is based on the CIF value. 2 lakh was a CIF value, so we are nothing adding that cost. As on today, custom duty is a 20% and euro cost is a 85. So 85 into this in Indian rupees, your CIF value. Okay, now we are adding the 20% custom duty. As on today, 20% custom duty. Sir, once we have done indexing, again we are taking the new rate of euro. Because we are finding the reproduction cost new. New, but index we did, no, sir. To get Index the will present take, cost. index will inflate your cost of machinery only. So cost of machinery जो आपकी 2 लाख यूरो थी, वो आज की डेट में 2,14,000 यूरो हो गए। $2.18 crore. Any doubt? एक्चुअली इंडेक्स में डायरेक्ट वो जो 1 करोड़ 20 को गुना करके 20% मिला दिए थे। कौन से 1 करोड़? वो जो 2 लाख इंटू 60 किए थे उस टाइम इंडियन करेंसी का जो रेट था उसमें कॉस्ट इंडेक्स। सर इंडेक्स जर्मनी का है, तो जर्मनी के करेंसी पे लगेगा ना, इंडिया के करेंसी पे इंडेक्स नहीं लगेगा। अच्छा, सही है। सो इन राउंड ऑफ 2.19 करोड़। एक्सेल दिखाना सर। जस्ट हमने क्या किया वो बताइए, फंडामेंटल बताइए क्या हुआ। क्या किया वो बताइए। क्वेश्चन पर ट्विस्ट हो सकता है, व्हाट इज द फंडामेंटल। हमने जर्मनी का इंडेक्स लगाया जर्मनी के प्राइस पे। ओके, जर्मनी का प्राइस था 2 लाख यूरोस, तो वो जर्मनी का प्राइस आज हो गया 2,14,286 यूरो। नाउ दिस यूरो वी आर कन्वर्टिंग इंडियन रुपीज and adding a custom duties. So your answer will be a 2.19 crore. कोई डाउट? ओके, फाइंड अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कैसे फाइंड करोगे रिप्लेस? हाँ बोलिए। 2 लाख के ऊपर क्यों लगाया आपने प्राइस इंडेक्स? तब तो उतने की थी ना प्राइस, वो तो क्या कंपेयर करने के लिए लगाया? सर जो मशीन 2014 में 2 लाख की थी, आज वो मशीन कितने में मिल रही है एज ऑन डेट ऑफ वैल्यूएशन 2021 में? इंटू 214 की। 214 की। हाँ जी।
When you are applying index number, you are getting the reproduction cost. आपका जो question था, find the reproduction cost. That's why you use the index number. अगर replacement cost पूछा होता तो you will not use the index number. पर वो replacement cost के लिए आप क्या यूज करते? Whatever the price given of the new machines. पर वो 214 में शिपिंग भी बीच में है, कस्टम भी बीच में है। ये 45,000 की मिल रही है, वो फ्री ऑन बोर्ड मिल रही वहां के उनके कहां पर? अपना जर्मनी में सेकंड हैंड जो है मशीन। Sir, we are not discussing about the second hand machine. We are finding a reproduction cost new. आपको reproduction cost new कैसे मिलेगी? Reproduction cost new कैसे मिलेगी? अब new word है, so of course it will be not part of the any second hand machine. ठीक है जी, सही है। Reproduction cost new find करने के लिए you have to apply the index. When you are applying the indexation, you are getting the reproduction cost new. When you are using the current price of the machinery, you are getting the replacement cost new. What is the difference between the reproduction and replacement? Okay. So what will be a replacement cost new? अब replacement cost new के find करने के लिए which data you will use? Coming 1.81. 180/20 180/20 लाख plus 2000 177 into 85. देखिए चतुर साहब, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले आप नोट करिए डेट ऑफ वैल्यूएशन, आप किस डेट को वैल्यूएशन कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर जितना भी डाटा दिया हुआ है ना, जरूरी नहीं कि वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड डाटा ही आपको उठाना है। जो यूजलेस डाटा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप सारा डाटा रेफर करेंगे ना, देखिए डाटा यहां पर दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आपको मार्केट से इकट्ठा करना है ये डाटा। इन क्वेश्चन, इन एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑल द डाटा इज गिवन, बट एज अ वैल्यूअर यू नीड टू कलेक्ट ऑल द डाटा फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम योर सोर्सेज, फ्रॉम योर रिलायबल सोर्सेज। तो जरूरी नहीं कि जितना भी डाटा आप इकट्ठा करें वो सारा का सारा ही एक क्वेश्चन में काम आएगा। अगर यहाँ पर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में वो अलग अलग डाटा यूज करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप नोट करिए डेट ऑफ वैल्यूएशन। आपको किस डेट में वैल्यूएशन करने के लिए बोला गया है, या आप किस डेट में वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। 21 में। फिर आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ओके, सो आपका 1,75,000 FOB है। That's why we are adding the cost of the freight and insurance. Okay, अब आपका 1.77 euro हो गया। तो this euro we are converting into the Indian rupees 15045,000. Then 20% custom. Okay, now again we are adding the 20% duty. Okay, so your total cost will be a 18054,000. सही है। If you are rounding, then it may be a 1.81 crore or 1.8 crore. Okay. सर जो ये मैंने सोल्व किया था, मेरे 1.802 आया था। तो इसमें मैंने क्या किया, ये वो कैलकुलेटर करते हो या एक्सेल से करते हो, उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने कस्टम लगा दिया, पहले कन्वर्ट करके कस्टम लगाना होता है। कस्टम ड्यूटी ऑलवेज इंडिया कस्टम ड्यूटी किस करेंसी में लेगा? वो रेट शूट लगा के एंड में लगानी है, कस्टम ऐड करनी है। मैंने सिर्फ ऊपर वाली कॉस्ट में की थी ऐड। मैंने भी पहले की थी, तो भी मेरा 180.20 आया। 17500। मतलब मैं वही बोलता हूँ, समझिए कंसेप्ट फंडामेंटल क्या है भाई। इंडियन पोर्ट कस्टम ड्यूटी किस करेंसी में लेगा? इंडियन रुपी में ही लेगा ना। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट आवर फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन रुपीस, देन वी हैव टू अप्लाई कस्टम ड्यूटी। अगर आपने फॉरेन करेंसी पे कस्टम ड्यूटी अप्लाई किया है, मे यू गेट लिटिल बिट
85 से मल्टीप्लाई करके 1.48 आ गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर 20% लगा दिया था, बट जो 2000 था ना उसके ऊपर 20% नहीं लगाया, जो 2000 का तो ये मोस्ट प्रोबेबल ये आपका जो कस्टम ड्यूटी लगेगा वो सीआईएफ वैल्यू पे लगेगा। हाँ, सीआईएफ पे मैंने एफओबी पे लगा दिया था, सीआईएफ पे लगाया था। हाँ तो दैट इज अ मिस्टेक कि यू अप्लाई ऑन द एफओबी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि टोटल डेप्रिसिएशन। तो अभी एज क्या हुई है मशीन की, सॉरी पहले स्क्रैप वैल्यू क्या है? 10 years. नहीं, यूजफुल लाइफ इट इज 5 लाख सर, 5 lakhs। 5 लाख 5 lakh। 5 lakhs। तो आपका डीए क्या बनेगा, डेप्रिसिएबल अमाउंट? 175.54। सही है। तो आपका डेप्रिसिएशन पर एनम क्या रहेगा? टोटल यूजफुल लाइफ क्या है? Divided by 10. 17.55 आएगा। ओके, तो टोटल डेप्रिसिएशन क्या बनेगा? एज क्या हुई है? 4 साल। 122.88। 4 साल। 14 to 21। 86। 7 years। 7 years, 7 years। 7 years। ओके, सेवन ईयर्स। तो टोटल डेप्रिसिएशन क्या बनेगा? $122.87। Okay, it is a age, it is a total depreciation। अगर इसको भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो 1.23 समथिंग इन करोड़ आएगा। ओके, टोटल depreciation। Okay, question is a depreciated replacement cost, so it is a total depreciation, so total depreciation again we have to deduct from the replacement cost। Okay, 0.58 replacement cost new। Any doubt, any question? Okay, what will be a price of second hand machinery in India? सेकंड हैंड मशीन कितने में मिल रही है? 45,000 euro 45,000 euro into 85, सही है। सो 38,25,000। 40,000 यूरो। अब ये तो है सीआईएफ वैल्यू, तो सीधा ही 85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस पे 20% कस्टम ड्यूटी ऐड कर देते हैं। सही है। सो कस्टम ड्यूटी आएगी 7.65 lakhs, उसको मिलाओगे तो इन राउंड अप इट विल बी बिकम 46 lakhs। अंडरस्टैंड? कैन एनीवन, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? यहाँ पे कहाँ पे लिखा है इंडिया में अवेलेबल है? सॉरी, यहाँ पे कहीं पे साइलेंट है ना, इंडिया में 45,000 की मिल रही है सेकेंड हैंड, मार्केट ऑफ द जर्मनी। हाँ तो सेकंड हैंड मार्केट जर्मनी में 45,000 यूरो में मिल रही है, हाँ तो जी इंडिया में कितने की पड़ेगी? सर, यही तो अपना इसके अगर यहाँ पे ये नहीं ना लिखा इंडिया में मिल रही है। अरे इंडिया में नहीं मिल रही है बट जर्मनी में मिल रही है, तो इंडिया में कितने में मिलेगी? दोबारा लेके आना सर, जर्मनी से इम्पोर्ट होगा तो वो तो अपना कस्टम वगैरह पड़ेगी ना उसके ऊपर। हाँ तो वो भी हमने ऐड तो किया ही ना, 45 कस्टम के ऊपर, ड्यूटीज, कन्वर्जन, वो सब हमने ऐड किया ही ना। 45 के ऊपर। 45 ऊपर सीआईएफ वैल्यू है तो वो फ्रेट इंश्योरेंस नहीं आएगा, तो इंडियन रुपीज में सीआईएफ वैल्यू बन गई आपकी 35। इट इज कस्टम ड्यूटी रेट, ये आपकी कस्टम ड्यूटी बन गई। ओके, तो ये हमारी प्राइस बनी इंडिया में आफ्टर पेइंग द कस्टम ड्यूटीज। As on date of the valuation, which types of obsolescence found in a valuing the machine? कौन सा obsolescence है और क्यों?
फंक्शनल ऑब्जर्वेशन कैसे आपने डिसाइड किया? फंक्शनल ऑब्जर्वेशन से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गया कैंसी कुछ। ज्यादा ना सर इसमें। ऑपरेशन कॉस्ट इज अ हम हायर. रेट कर रहे हैं Okay, not operation cost. Yield loss is there. पुरानी मशीन कम कमा के दे रही है कंपेयर टू द न्यू मशीन ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, मतलब insufficiency. So it is a functional observation due to the yield loss. Amount of observations if discount rate is a this much. तो क्या करेंगे? कितना कमाई है उसकी? 4 लाख. बैलेंस लाइफ क्या बची है? 3 years. 3 years. Okay. तो 4 लाख 4 लाख 4 लाख. अब एट रेट ऑफ द 10% पीवी फैक्टर क्या बनेगा? एनीवन? पीवी फैक्टर एट रेट ऑफ 10% फॉर फर्स्ट ईयर. स्क्रैप वैल्यू नहीं लेंगे सर, सॉरी, स्क्रैप वैल्यू करने कंसीडर क्या? 191 ये 12.68 आ रहा है. स्क्रैप वैल्यू जब इनकम की बात होती है, एट द टाइम वी आर टेकिंग अ स्क्रैप वैल्यू. सही है. इट इज अ यील्ड लॉस. कितना घाटा ज्यादा जा रहा है. ओके, सो पीवी विल बी and sum of PV $9.94 lakhs. Amount of obsolescence is due to the obsolescence in crore. अगर राउंडिंग करते हैं 10 लाख का राउंडिंग 0.1 करोड़. किसी को समझ में नहीं आया ये कंसेप्ट? What will be a depreciated replacement cost after adjustment of the obsolescence? Replacement cost DRC क्या बनी होगी? Okay, so to find this DRC, we are just taking care of the H. We have not deducted the obsolescence. So further, we are also deducting the obsolescence. Rounded figure 10 lakh. So it will be in range of the 48. Okay. What will be a reported value if purpose of insurance reinstatement value? Reinstatement value इंश्योरेंस पर्पस के लिए आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो आपके रिपोर्ट में कौन सी वैल्यू दोगे? Replacement. Maximum of reproduction and replacement cost. ओके, हायर ऑफ रिप्रोडक्शन कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट. सो जो हमारा रिप्रोडक्शन कॉस्ट था 2.19 करोड़, इट विल बी अ कॉस्ट. कहाँ पे चला गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट विल बी रिपोर्टेड वैल्यू इफ पर्पस ऑफ सिक्योर लैंडिंग? क्या रहेगा? सिक्योर लैंडिंग से वैल्यूएशन करना है तो कौन सी वैल्यू दोगे? सेकंड हैंड वैल्यू अवेलेबल. नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हो सेकंड हैंड वैल्यू. व्हाट इज अ, क्या बोलोगे? 46 lakh. सॉरी, 46. हाँ वो तो है, बट क्यों 46? व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट? यू अडॉप्ट द करंट अवेलेबल है ना सर. Minimum value. Minimum Minimum- of the approaches. मिनिमम ऑफ द All the approaches.
all the approaches. Okay, here we have applied the cost approach and market approach. So by the market approach, we are getting the 48 crore, sorry, 0.48 crore, which is a minimum than the 46 crore, which is a minimum than the cost 48 approach. तो पुराना मशीन है ना सर? Sorry, 48 जो आया है वो तो पुराना मशीन, 40, जो 48 आप लिए हैं, हाँ पुराना मशीन, सेकंड हैंड पुराना मशीन. मशीन को हम नहीं कंसीडर करेंगे बोले आप उस टाइम. कंसेप्ट क्या है? अगर सिक्योर लैंडिंग के वैल्यूएशन करना है तो लोअर ऑफ 3 अप्रोचेस. सही है. यहाँ पे वी हैव अडॉप्ट द कॉस्ट अप्रोच एंड मार्केट अप्रोच ओनली. कॉस्ट अप्रोच से वैल्यू क्या है इस मशीन की? कॉस्ट अप्रोच बोलने से रिप्रोडक्शन लेंगे या रिप्लेसमेंट? कॉस्ट अप्रोच से वैल्यू क्या है इसमें जो हमने कैलकुलेट किया है गिवन डेटा के बेसिस पे? वही तो कंफ्यूज हो रहा है सर. कॉस्ट नहीं अप्रोच कंफ्यूज नहीं, आंसर तो है ही है. नहीं, रिप्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे या रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट. आपने यहाँ पे कॉस्ट अप्रोच के बेसिस पे क्या वैल्यू फाइनल की? 0.48. 0.48. सही है. कॉस्ट अप्रोच मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्रोडक्शन कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस ऑब्सोलेशन, ये सब करके जो आपकी डीआरसी आई है, योर डीआरसी is considered as a value by cost approach. So DRC by cost approach after deduction of the depreciation and after deductions of the obsolescence is a 0.48, and by the market approach it is a 0.46. So your answer will be a 0.46. Now what is a hierarchy to adopt approaches? Anyone? देखिए, कोई जब भी भी आप asset मिस्टर है, राव, जब भी आप कंपैरिजन करते हैं ना किसी भी मशीन के साथ, तो वो मार्केट अप्रोच में हो जाता है, सेल कंपैरिजन. यहाँ पर आप सेकेंड हैंड मशीन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक मार्केट अप्रोच. थोड़ा सा कंसेप्ट अगर क्लियर आप रखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत इजी है. यस सर, नहीं, प्लीज. सॉरी उस सॉरी टाइम टू. वही चीज हमको कंफ्यूज हो रहा है कि सेकंड हैंड मशीन को हम क्यों कंसीडर करेंगे? वो तो खराब कंडीशन में भी हो सकता है. सर खराब कंडीशन में ये कहाँ कुछ ऐसा लिखा गया है? आपका जो सब्जेक्ट मशीन है वो भी 2014 में था, ये भी 2014 में है. देखिए, आपको सेल इंस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर खराब या सही नहीं दिया हुआ, सेल इंस्टेंस दिया वी हुआ है हैव आपको. नॉट डिस्कस एनीवेयर अबाउट द कंडीशन. सही है. सो इट इज लिटिल बिट, कई बार होता है ओवर थिंकिंग, बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओवर द व्हाट इज द डेटा और सर्कमस्टेंस गिवन, उसी को यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. अगर यहाँ कंडीशंस के बारे में डिस्कस होता तो वी विल कंसीडर द कंडीशन कि भाई सब्जेक्ट एसेट इज अ सुपर्ब कंडीशन और जो अवेलेबल इन द जर्मनी है इट इज अ पुअर कंडीशन, ऐसा कुछ लिखा होता तो वी विल टेक केयर ऑफ दिस कंडीशन. भाई खराब पुअर कंडीशन मशीन अवेलेबल एट द 45, तो गुड कंडीशन मशीन में भी लिटिल बिट बेटर, उसकी अच्छी प्राइस होनी चाहिए. बट लेट्स कंसीडर द सेम प्रॉब्लम इन लैंड एंड बिल्डिंग. एक प्रॉपर्टी है इतने में मिल रहा है, और एक प्रॉपर्टी है जो 2012 में या 14 में बना था वो इतने में मिल रहा है. दैट इज कॉल्ड द सेल इंस्टेंसेस, not the condition. We should not consider about the sale, that condition. We should consider about the sale instance. Yes, sir. Sorry to interrupt. Yeah, no issues. Yeah. Any doubt or any? Okay, this Excel also has 4 case studies and may available for your examinations also or practice also. I think so. I have also calculated the answer, but maybe in a different sheet. So it is answer also are there with the calculations. Na? Yeah, answer is अभी already वो given.
हायरार्की बोलिए। के बारे में बता रहे थे आप, शायद वो रह गया। या सो बताइए, हाउ टू चूज योर अप्रोच इन हायरार्की अप्रोच। सो आज की डेट में जो हायरार्की है, यू हैव टू डू द वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट फर्स्ट। इट इज पॉसिबल बाय द इनकम अप्रोच, तो इनकम अप्रोच से करना है। इफ इट नॉट पॉसिबल बाय द इनकम अप्रोच, you have to do with the market approach. If it is not possible by the income approach and market approach, then you have to adopt the cost approach. Okay. Now, which are the characteristics you look for adopting the approaches? Anyone? Idea किसी को? क्या characteristics आप देखते हो, या what are the value characteristics that you are finding in an asset? ऐसे कुछ गाइडलाइंस है कि नहीं? The selection of approach are normally based on the three characteristics. One, income generation. Second, marketability. And third, it is a utility. Okay. So we are checking this three criteria. Is asset is generating income? It asset is marketability, मतलब market में sell हो सकती है. Is asset has some utilities, उसका uses या degree of uses है कि नहीं? Okay. So if answer is a yes, yes, yes. Yes, asset is generating the income. Its asset is a marketable in the market. Asset market में sell हो सकती है. Yes, asset market में sell हो सकती है. Each asset has a utility. ये तीनों का आंसर yes है. तो best approach to value the asset is a income approach. Okay? ऐसी प्रॉपर्टी का इनकम अप्रोच से वैल्यूएशन करना थियोरिटिकल इज अ बेस्ट. सेम. Okay. Is income generation? No. Is marketable? Yes. Is has utility? Yes. Best approach to value the asset, it is a market approach. Then income generation? No. Marketable? No. Utility? Yes. Best approach, it is a cost approach. Okay. So there are the many things fundamental available in the valuations theories that we have to study and understand little bit. Okay, so हायरार्की आज की डेट में भी है कि भाई वैल्यूएशन अगर इनकम अप्रोच से हो सके तो इनकम अप्रोच से करो. इनकम अप्रोच से नहीं हो सकता है तो मार्केट अप्रोच से करो. मार्केट अप्रोच से नहीं हो सकता है तो कॉस्ट अप्रोच से करो. ओके. एंड दिस आर द थ्री क्राइटेरियाज. मतलब ऐसे आपका सिलेक्शन होता है विच अप्रोच इज बेस्ट सुटेबल. यू हैव टू चेक आउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज against these three parameters. Yeah. Anything? Here? कोई डाउट है तो पूछिए. फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था इनकम फैचिंग एंड मार्केटेबल प्रॉपर्टी, मार्केटेबल एंड नॉन इनकम फैचिंग प्रॉपर्टी, नॉन मार्केटेबल नॉन इनकम फैचिंग प्रॉपर्टी, नॉन मार्केटेबल इनकम फैचिंग प्रॉपर्टी. उसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन जैसा सर ने बताया इससे इजी नहीं हो सकता. जैसा सर ने अभी आपको बताया इससे इजी आपको माइंड में रखने के लिए कुछ नहीं हो सकता. बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है. सर Okay, any doubt? Any question? कोई भी? थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में जो रिप्रोडक्शन
और ये क्या है दूसरा? रिप्रोडक्शन, रिप्लेसमेंट एंड रीइंस्टेटमेंट, तीन हाँ, चीजें हैं सर। अरे अभी से भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा सर? वही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा थोड़ा बादाम सिंपल खाइए लैंग्वेज ना। में बता दीजिए सर। व्हाट यू मीन बाय द रीप्रोडक्शन कॉस्ट? बताइए, आप ही ट्राई कीजिए, आपके दिमाग में क्या है रिप्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब? रिप्रोडक्शन मतलब ओरिजिनल मशीन जैसे था वैसे ही और एक करना है। ओके, सो आपका समझ सही है, बट व्हाट इज अ मिसिंग? Reproduction cost new means of amount required to create identical or duplicate of the machine. Duplicate word नहीं है वहां, replica of the machine. जो मशीन है वैसा ही मशीन आज की डेट में बनाना है तो कितना खर्चा होगा? इट इज अ रीप्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए मेरे पास लैपटॉप है 10 साल पुराना, वैसा ही लैपटॉप डुप्लीकेट मुझे आज बनाना है, तो बताइए खर्चा ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम। सर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होने से कम होगा, दूसरा आइटम ज्यादा होगा। नहीं, ज्यादा खर्चा आएगा। क्यों सर? आज मेरा 10 साल पुराना लैपटॉप आउट ऑफ प्रोडक्शन हो चुका है। सामान ही नहीं मिलना जी। सही है, वो माल ही नहीं मिल रहे, स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा है। तो किसी कंपनी को बनाने के लिए वो मेरे कंपोनेंट सर सब कुछ इंडिविजुअली बनाने पड़ेंगे, या तब के कोई और खरीदना पड़ेगा बाजार में से, उसमें से निकाल या के करना पड़ेगा। दैट इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक्चुअली। उसके जैसा खरीदो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग सिमिलर एसेट हैविंग द इक्विवेलेंट यूटिलिटी। उसके जैसा लैपटॉप खरीदने जाऊंगा बाजार में तो मुझे मे बी अब 25-30 हजार 35 हजार में मिल जाएगा, बट नहीं, मुझे तो वो 10 साल पुराना जैसा ही लैपटॉप की कॉस्ट फाइंड करनी है। आज की डेट में बनना कितने में बनेगा? तो कंपनी बोलेगी भाई आपको अगर ऐसा ही जो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया वही बनाना है तो ओके बना देंगे, बट कॉस्ट में भी ये 20-25 लाख होगी। सही है? तो ये समझो, रिप्रोडक्शन कॉस्ट मतलब अमाउंट और रिक्वायर्ड टू क्रिएट द एसेट, आइडेंटिकल एसेट और रिप्लिका ऑफ इट। मेनी टाइम्स प्लांट एंड मशीनरी में इट इज नॉट पॉसिबल, या many time in land and building में it is also not possible to create a replica, because that type of materials nowadays not available, that type technology is not available. सही है? या it's become out fashioned, it's not marketable. तो लैंड एंड बिल्डिंग में कई बार होता है कि यू कैन नॉट, इट इज नॉट सुटेबल टू रिप्रोड्यूस, इट इज बेटर टू रिप्लेस इट। आज में भाई जो अच्छा लैपटॉप आ रहा है वही लैपटॉप मुझे दे दो, इट इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सही है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। टू फाइंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब देयर इज अ 3 मेथड्स। ओके, एक होता है डिटेल मेथड, मतलब वी इनवाइटिंग कोटेशन, वी आर डिस्कसिंग विद द मैन्युफैक्चरर कि आज की डेट में कई कौन इस सिमिलर टाइप ऑफ मशीन की कौन सी प्राइस चल रही है, दिस गिव अस रिप्लेसमेंट कॉस्ट। Second is the indexation. When you are applying indexation, you are getting the reproduction cost. Third is a cost to capacity. When you are applying cost to capacity, you are getting a replacement cost, not a reproduction cost. Okay. So keep in the mind this funda about what is reproduction cost and replacement cost. Indexation will give you always reproduction cost, and our market survey or detailed inquiry and cost to capacity will give always replacement cost new. Okay, बताइए, any more doubt? किसी को कुछ भी? और एक रीइंस्टेटमेंट होता है मिस्टर राव, रीइंस्टेटमेंट में आप डेप्रिसिएशन काउंट नहीं करेंगे फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस। If the reinstatement clause is introduced in the policy, then no depreciation is to be counted. Am I right, sir? Yeah, it is. सही है? तो आपकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू है
In an insurance, it is treated as a reinstatement cost new. Just a minute, I am